Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again in front of you with the last topic of our chapter number 4, Globalization and the Indian Economy, of your subject Economics. Students, today, as I have already told you, that this one is the last topic of your entire syllabus of your Economics. Student, today's topic that to which we are going to deal is the struggle for fair globalization. One of the important question arises in front of us. We have seen the different aspects of globalization. Starting from the definition of globalization till we have gone through with the role of MNCs. Can MNCs benefited the local government, the local companies, impact of MNC on country's economy, etc. Then we also came across with government's policies, with liberalization, with privatization sort of terms. Students, most important question is, does everyone has benefited from globalization? क्या सभी को ग्लोबलाइजेशन से लाभ हुआ है? If we are talking about this particular question, the straight away answer is no. How? Educated, skilled, and mostly the wealthy people have made a best use of this process. It means this globalization. If you're talking as compared to poor, uneducated, unskilled, like farmers, workers of unemployed sectors, women sections, small producers, etc. Even though the local companies too, they are not benefited by this globalization process. So, don't we have or we have globalization? क्या ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए? अगर इससे सबको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो हमारा आंसर होगा कि वी नीड ग्लोबलाइजेशन. But what type of a globalization we need? We need for fair globalization, students. It means that the globalization should be, or by the globalization, every section of the society should be benefited. So next question, how to make globalization more fair? Or who is going to ensure the benefit or a fair globalization for its citizen? So let's we talk on the first, and that is your need for fair globalization. Students, fair globalization would create opportunities. What most important is create opportunities for all, and all means here whole the section of the society, and also it ensures that the benefits should be shared by all and in a better way. इसका मतलब it doesn't meant about that globalization should be benefited only to developed countries or only to richer people or only to the educated or wealthy people. No, children. ये ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होना चाहिए और ख़ासकर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को. देन क्वेश्चन अराइजेस, हु इंश्योर्स फेयर ग्लोबलाइजेशन? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयर ग्लोबलाइजेशन, बट कौन इंश्योर करेगा दैट द ग्लोबलाइजेशन शुड बी फेयर फॉर इट्स सिटीजन? और कैसे, कौन करेगा फेयर ग्लोबलाइजेशन?
who is ensuring the globalization for its citizen, and how? This is the quite important question. Students, government of a country need or government of a country is ensuring the fair globalization to its citizens. Not only an individual can go for fair globalization, but the country's government should intervene, or you can say interfere, or should uh, you can say should look after in the matter of fair globalization. So, government of a country need to ensure fair globalization to its citizen. Why do we need fair globalization? Create opportunities for all. Also ensure that benefits of globalization are shared by all in a better way. And who is playing a role, relevant role? कौन बनाएगा? The government has to play a major role in making globalization fair, students. But how? Students, government can make policies that should be policies must protect the interest not only for the rich and powerful, but the people. It means but to all the people in the country of every section. जैसे मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ रिच वेल्दी एजुकेटेड लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दैट पॉलिसीज वो इस तरह से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे दैट शुड बी अवेल्ड बाय ऑल. गवर्नमेंट can ensure labor laws that should be properly implemented and workers get their rights. That is, the labor law should be there to implement it to protect the workers. Students, it also supports the small producers to improve their performance when the globalization starts. It can support small producers to improve their performance till the time they became strong enough to compete. Small producers of a company of a country, what domestic producers हैं children, or this is the duty of a government to protect these small producers. आप कहेंगे मैम ये तो सोशलिस्ट कंट्री में होगा, नॉट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी. ऑफ कोर्स बेटा, ये बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू मेक द लॉज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स ना. और वो कैसे हम करेंगे? वो हम कहेंगे समटाइम्स it is necessary that the trade barriers should be time to time should be imposed. Why? If barriers or investment barriers can be utilized or trade barriers can be imposed by the government, it ultimately protects the domestic producers better. तो हम कह सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम व्यापार में अगर पाबंदियां लाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको मिलेगा? स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, और लोकल प्रोड्यूसर्स कैन फ्लरिश. हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने सारी विदेशी कंपनियों को ही भारत में ला के रख दिया तो भारत की कंपनियों का क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन इन ऑल दीज मैटर्स. Thus, if necessary, the government has to use trade and investment barriers to protect our local companies. It can negotiate at the World Trade Organization for fairer rules. It means that the government also negotiate at the WTO for the fairer rules. It means that whenever we are having the meeting of trade concerning topic in WTO, the government has a right to put their problems, their grievances,
और ख़ासकर वो फेयर जो ट्रेडिंग है, फेयर रूल्स को वो निगोशिएट करें। किसके साथ? अदर कंट्रीज़ के साथ। जब हम लोग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दे कैन आस्क और दे कैन निगोशिएट फॉर द फेयर रूल्स। स्टूडेंट्स, this one the negotiated at WTO for their fairer rules and concession for developing countries, imposing trade barriers to protect the interest of domestic producers, as I have already told you about this. The next very important is align with other developing countries to fight against the domination of developed countries. Whenever needed, the government can take support or give support to the other developing countries, or they can make a align with the other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. That is WTO, as we have already seen that sometimes the WTO can be biased. वो biased हो जाता है because this WTO is usually dominated by the developed countries. तो कहीं ना कहीं अगर एकजुटता होगी किसके में? विकासशील देशों में, तो वो विकासशील देश अपनी बातों को WTO पे रख सकते हैं। इकट्ठे अगर हों तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, और अल्टीमेटली वो किसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ के मोनोपोली के अगेंस्ट में। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ में चेंजेस या दखलंदाजी करते हैं, उनको वो चेंज ओवर कर सकते हैं, उनको वो हटा सकते हैं, या उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो अल्टीमेटली फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो मोनोपोली है या उनका जो डोमिनेंस है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। और वो कब होगा? जब डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में एकजुट होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। स्टूडेंट्स, people can also play a very, very important role in the struggle for fair globalization. How? By or through utilizing the massive campaign and representation of various people's organizations. It influences the important decisions relating to trade and investments at the WTO. ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, है ना? कुछ ऐसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत ऐसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन इज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो अपने लेबर लॉ के लिए वो लेबर लॉ में इम्प्लीमेंटेशन या अमेंडमेंट चाहता है और वो गवर्नमेंट पे फोर्स करता है, तो उसका अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे फोर्स करता है कि आप ऐसे लॉज बनाएं जिसका सीधा सा असर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो अल्टीमेटली ये किसके लिए होगा? ये कहीं ना कहीं मेथड या वे किसके लिए जाएगा बेटा? टुवर्ड्स द फेयर ग्लोबलाइजेशन। अगर वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन दीज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो अल्टीमेटली अगर कोई नहीं बोलेगा तो क्या वो एक्सप्लॉयटेशन वो चलता रहेगा। बट ऑर्गेनाइजेशंस अगर काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने लेबर्स को सपोर्ट कर रही हैं और वो गवर्नमेंट पे प्रेशराइज कर रही है टू मेक द लेबर लॉ स्ट्रांगली एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रांगली in the favor of you can say the development of the workers, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? वो फेयर ग्लोबलाइजेशन के तरफ उनका स्टेप बढ़ेगा। तो it leads towards the steps towards globalization, fair globalization. Is that clear? So by this, children, your entire syllabus of economics is now finished. हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, दैट इज़ द नेशनलिज्म इन यूरोप
from Monday. But children, you have to revise, और इन 2 दिनों में, that is from Friday and Saturday, I would like to take the revisions of your entire 4 chapters of your economics. Is that clear? If कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है इस चैप्टर में या मनी एंड क्रेडिट में, इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन आस्क. You are free to ask. But by this notion, you first of all, you have to go through with the videos, you have to go through with the notes, you have to write down the notes. Also, you have to check out the syllabus, check out your book. And after that, you can make your own notes if possible. Then we will discuss on the major issues. हम लोग रिविजन्स करेंगे, रिकैपिचुलेशन करेंगे बेटा, है ना. इन 2 days में वी आर गोइंग टू रिकैपिचुलेशन ऑफ द entire chapters of your economics. So till then, students, take care, goodbye, and God bless you.